dark. We are talking about reflected case, and this is more common, reflected, and transmission is not much common. So we'll talk about dark and bright only in reflected case. This is 2n plus 1 by 2 lambda, is bright. And then from this we have found out the formula for say lambda equal to dn square minus dm square divided by 4n minus m r, or the value of r was found to be dn square minus dm square divided by 4n minus m lambda. Okay. Now this is what we have taken. इसको हमने reduce कर दिया 2t instead of 2 mu t. Okay. And then we took p equal to rn square divided by 2r. And then from rn square we found out the dn square. And then we design this formula. Okay. So the question is now, instead of now the in Newton's ring, suppose this is what the arrangement is. And there is an air film here. Now instead of air, if I add some medium, liquid medium, some liquid, then how can you find out the refractive index of the medium? The condition is that you don't know the wavelength, you don't know the radius of curvature. For example, if we start with the same, like 2 mu t cos r equal to n lambda, is for dark, and then we go for normal incidence. So normal incidence means I equal to 0, and therefore r equal to 0, and therefore cos r equal to 1. So we just write 2 mu t equal to n lambda. Now we know the value of t, which is equal to rn square upon 2r, and therefore this keep the value of t here, so 2 mu rn square upon 2r equal to n lambda. And therefore what we can write is 2 get cancelled out here, and then we have the rn square equal to n lambda r upon mu. And therefore dn square will be equal to कितना आएगा बताओ? dn square will be equal to 2n lambda r upon mu. 4. Sorry, 4n lambda r by mu. is 4 lambda, because ये मैं कल भी बता रहा था कि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि आप गलती करो. ठीक है. So now this n is dummy suffix. Okay, n can be anything 1, 2, 3, 4, and also we can write dm. Now why we are taking dm? ये दूसरा क्यों ले लिया हमने? नहीं, very simple, because we don't rely on any one measurement. किसी एक मेजरमेंट पे हम रिलाई नहीं कर सकते, and therefore we take number of readings, say 20 readings, okay, and then we plot a graph. कल हमने इसके बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन कर लिया, and this dn square by dn, sorry, dn square by n, या dm square upon versus m, इसका straight line graph. Now if you have the readings like this,
तो जो भी रीडिंग ये लाइन पे आ रहे हैं, देन यू टेक द स्लोप ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। तो ये 2 पॉइंट हमने डिसाइड करे। कैसे डिसाइड किए? जो इस स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं वही पॉइंट लिए। So I have not taken any other point which is away from the straight line, which is erroneous output. ये erroneous हो गया, ये erroneous हो गया, इसमें error. This is quite okay. Will not say this is error free. There could be, but of course we can just reduce it. Okay. Now, if you just want to find out the value of mu, so what you can write is as mu equal to this dn square minus dm square divided by 4n minus m lambda r. That is the formula. Clear? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Any question? कैसे नो सर? हाँ हाँ, तो उल्टा किया ना सर आपने? नहीं मुझे समझ में नहीं आया। सर वो म्यू इधर गया तो डीएन स्क्वायर बाय डीएम स्क्वायर नीचे आएगा ना सर? गुड, मिला ध्यान है कि नहीं किसी? क्या सर आप? नहीं होता है ऐसा। अभी तो बोला ना किसी ने 2 बोल दिया 4 की जगह। यहाँ पे 4 लिखना था, 2 लिख दिया था। ठीक है, तो दिस इज 4n माइनस m लैम्बडा r अपॉन dn स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर। ओके, नाउ इफ वी नो दिस इज ऑब्जर्वेशन, dn dm n m ये एक्सपेरिमेंटली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, बट यू मस्ट नो लैम्बडा एंड r। वो आपको अगर दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग सोडियम वेपर लैम्प, देन यू नो द वेवलेंथ ऑफ दिस source. R is the radius of curvature of that planoconvex lens. वो आपको अगर दी है मैन्युफैक्चरर ने दी है तभी आपको पता चले, अदरवाइज इट इज रियली डिफिकल्ट। वो अलग एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि देन यू आर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट R and then lambda and then you are trying to find out the mu. But at this moment I don't know which source I am using, and I don't know what the radius of curvature of the planoconvex lens. So can I find somehow the value of mu, the refractive index of the liquid? क्या मैं निकाल सकता हूँ? Okay, the first question is whether I can find out the refractive index of this liquid. Yes or no? You can check also. Okay, so all of you option C, IDK. Okay, now if I write the same equation, this one, okay. Suppose this is equation 1, and if I write the equation 1 for air, तो वो कैसे आएगा? What will be the change in the equation? Air के लिए क्या change हो जाएगा? आदेश, roll number 84. Yes, sir. If you just want to change the equation 1 for air के लिए क्या change करना पड़ेगा? Sir, mu equal to 1 will be there. That's it. It's very simple. So what I can write is mu की जगह 1 अगर मैं लिखता हूँ, so this will be dn square minus dm square. Now I deliberately write this as for air, okay, and then 4n minus m lambda r. ठीक है? Now if I write the similar equation for medium, equation 1 for
medium. Again here also I write it is in bracket dn square minus dm square for medium will be equal to 4n minus m lambda r divided by mu. Right? ये इक्वेशन लिखा है हमने ऊपर ये सेम, बस मैंने इसको मीडियम कर दिया. अब आप मुझे बताओ कि म्यू की वैल्यू कैसे निकालें. The refractive index of medium with respect to air we have to take maybe. Yeah, but these are the two equations. How we will calculate the refractive index from these two equations? These two equations. सर 4nm n माइनस m लैम्डा आर की जगह एयर का रखें dn स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर ऑफ एयर. Absolutely right. Absolutely right. Fantastic. ये हमें पता ही है ना 4n minus m lambda, ये इसकी वैल्यू ये है, तो ये यहाँ पे पुट कर दो. Simple. And then you take mu on left hand side and this on right hand side. So this time, Uday, this time we will be careful. Okay. So this is dn square minus dm square for air. Okay. Divided by, yeah, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा. dn square minus dm square medium. So even if you don't know wavelength of the light and the radius of curvature, keeping all the things constant, only you replace the air by medium, so we can find out the refractive index of liquid. ठीक है? Clear? Yes, Any sir. doubt? Any No, doubt? sir. Any question? पक्का? फिर से मैं आपको मैं ये इक्वेशन भी दिखा देता हूँ. dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू. ठीक है? अगर मान लो कि एयर में हमने किसी फ्रिंज का या रिंग का रेडियस कैलकुलेट कर लिया या डायमीटर कैलकुलेट कर लिया. ओके. एंड देन वी रिप्लेस द एयर बाय द वाटर. सिचुएशन क्या है? पहले एयर में था, फिर डायमीटर आपने निकाल लिया. फॉर एग्जांपल डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर. नाउ यू रिप्लेस द एयर बाय सम मीडियम. नाउ द डायमीटर ऑफ that ring will decrease, increase, remain same. Last option, add it. Don't tell me, just post. First condition, it was in air, so the diameter of the ring was 1 centimeter. Take any maybe first ring, second ring, third ring, whatever it is. फिर उसी रिंग का अगर डायमीटर आप कैलकुलेट करते हैं, प्रोवाइडेड यू रिप्लेस द एयर बाय मीडियम, वेदर द ring diameter will decrease. Option A, increase. Option B, remain same. Option C, and I don't know option D. And I want the at least 39 options, 39 answers. 38, one is left. Okay, only one answer. How are others? Okay, okay. सर good. वाटर स्टेडी है क्या सर? Yeah, obviously. और वो इतना कम होता है कि you don't think about the steady or turbulent or something. I really feel that we should have poll on these kinds of questions. Yes, sir. Okay. So there is no one who is saying same. So obviously that is going to change. Okay. And the class is divided into two parts now, A and B.
Some are saying A, some are saying B. Any other? It takes not much time. Okay, जो ऑप्शन जो अपना ऑप्शन देगा उसकी अटेंडेंस लग जाएगी. आई डोंट वांट टू टेक द अटेंडेंस टू. अब आएगा. अब ऑप्शंस आ जाएंगे फटाफट. It is very simple. See the relation between the diameter and the refractive index. So if the refractive index increases, the diameter will increase or decrease. Is it directly proportional or inversely proportional? Inversely proportional. Inversely proportional. Inversely है. It is very simple. जब inversely है तो क्या होगा? जब ये म्यू बढ़ाएंगे तो dn कम हो जाएगा. ठीक है. अब एयर से वाटर अगर रिप्लेस किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा या कम होगा? Less. हाँ. No, Sir, sorry. तब decrease. More. Refractive index of water is more than air or it is less than air? More than air. More than air. More It is more than air. air, sir. हाँ, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है ना. एयर को आपने रिप्लेस किया वाटर से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीज. So as this increases, this will decrease. क्योंकि ये तो कांस्टेंट है. 4 and lambda is constant. That is not going to change. So the answer is A, not B. ठीक है. जितने लोगों ने B लिखा है तो थोड़ा सोचो कि दिस इज, मतलब कभी कभी होता है ऐसा, यू जस्ट in hurry you just choose some option, but that is how you should be very careful, that because this is remaining constant, lambda is constant, r is constant, n the number of ring. I said that okay, whatever it may be, maybe fifth ring to fifth ring, 6 है तो 6 है, जो भी है, so n is remaining constant. So in that case the rings will be much close to each other, close हो जाएंगे. जल्दी, sorry, the distance between these rings will be less. ठीक है. Clear? Any doubt? पक्का? Any question? नहीं. ठीक है. Let me write this equation again here. Again, I will just write this equation. And what is the equation? dn square equal to 4n lambda r divided by mu. Now let us consider question 2 now. Let us consider that the setup is in air and initially we use the wavelength as say red. Then some diameter was say 5 centimeter. Now if we replace this by yellow light, again the options are same, whether the diameter will decrease, dn will decrease, it will increase, remain same, and I don't know, A, B, C, D. पहले हमने रेड कलर का लाइट यूज किया. ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट. उसके उस टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर रिंग की डायमीटर थी 5 सेंटीमीटर. अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया येलो से. सो वेदर द डायमीटर विल इंक्रीज और डिक्रीज और इट रिमेन्स सेम, और ऑप्शन डी यूनिवर्सल ऑप्शन. गो अहेड. Shoot your answers. No one? Of course, if you have doubt, please ask. आपको कोई भी डाउट हो तो you can ask me. Okay.
Okay. How about others? Sir, please repeat the question. श्योर इसे मैंने लिखा भी है. क्वेश्चन ये है कि द सिचुएशन इज इन एयर फिल्म है, ठीक है. नाउ वी डोंट हैव एनी मीडियम. नाउ इनिशियली व्हाट आई डिड इज आई यूज द रेड सोर्स ऑफ लाइट. रेड कलर का कोई भी एक सोर्स. उस टाइम पे उसका डायमीटर किसी एक पर्टिकुलर रिंग का डायमीटर, फॉर एग्जांपल 10th रिंग, तो उसका डायमीटर आया 5 सेंटीमीटर. Now I replace the source with yellow. Now the diameter will decrease or increase, or it remains same, or I don't know. Yes, Ankit, you want to ask something? Okay, but good. Attendance लग जाएगी आप लोग. Now you see the relation is very simple. Okay. Now we are changing the wavelength, and therefore the relation will be, now this mu is constant, r is constant, n is constant, and हम जो पहले ले रहे हैं ना वही ले रहे हैं, ठीक है. Now this is equal to dn square is proportional to lambda. Now this is very simple. Now the question is whether the wavelength of red is higher or yellow is higher. What is the range of this? क्या रेंज होती है? अप्रोक्सीमेटली ठीक है, चलेगा. रेड की वेवलेंथ कितनी होती है? 620 to 700. कितना? 6? 620 to 750. ओके, तो 600 से 100 के आसपास होगी, ठीक है. वी आर नॉट मच केयरफुल अबाउट इट एट दिस मोमेंट. हमें सिर्फ ये देखना है कि वेवलेंथ कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, ठीक है. येलो की कितनी होती है? 580. 580 580. nanometer. ये समथिंग लाइक 650 या 700 के आसपास होती है, ठीक है. मैं इसको 650 लिख दूँ. Sir, 700. ठीक है, 700 ले लीजिए. जो उदय ने बोल दिया 700, ठीक. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग. यू कैन सी वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग. डिक्रीज होगी. अब वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रही मतलब डायमीटर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिक्रीज इंक्रीज? Decrease. It is obvious. It is directly proportional. Decrease. तो जिन्होंने ऑप्शन बी चूज किया है तो थोड़ा सा सोचो कि आपने बी क्यों चूज किया. Most of you have given the answer as A. So it's quite okay. Clear? समझ में आ गया? So that this can be asked in objective type exam. Suppose अगर second semester की एग्जाम भी ऐसे होती है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की हुई, then this can be asked. Where you don't need any calculation. Calculation की जरूरत ही नहीं, ठीक है. Now we'll go for calculation type of problems where you need calculation. So write down. Question 1. I am not going to write here. Okay, so you have to write. So I hope everybody is ready with pen and paper. Yes, sir. Yes, sir. So a thin film is illuminated with a wavelength of 589 nanometer. In such a way
in such a way that the angle of refraction is 60 degree, 60 degree. Full stop. If the thickness of the thin film, if the refractive index of the thin film is 1.5, calculate the smallest thickness. Calculate the smallest thickness of the thin film so that it appears dark. Okay. जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट फॉरगेट अबाउट द लास्ट लाइन व्हाट इज आस्क्ड. ठीक है, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा मैं उल्टा बता रहा हूँ, but that is the truth. Normally what we do is we focus on the last line and we forget what we have. ठीक है, तो हमारे पास क्या है ये हमें पता ही नहीं होता और फिर हम वो अरे इसका फॉर्मूला क्या है. No, first thing you focus on what is given. So tell me what is given in this problem. Angle of refraction 60 degree. Wavelength. Okay, wavelength is 589 nanometer, and then angle of refraction is given 60 degree. 60 और क्या दिया है? Diffractive index. Refractive index of the medium is given 1.5. Anything else is given? ठीक. Now what is asked? क्या पूछा गया है? Thickness of thin film so that it appears dark. हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट थिकनेस, ऐसे लिखा है ना? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. ये कितना होगा? Now what do you mean by smallest thickness? For dark, it should appear dark. Now what is the smallest thickness? चलो ठीक है, ये देखते हैं. What is the condition for dark thin film? क्या? 2 mu t cos r is equal to n. Yes, 2 mu t cos r equal to n lambda. Now you tell me from this equation what do you mean by smallest thickness? यहाँ पे एक वैल्यू दी है आपको, स्मॉलेस्ट थिकनेस. स्मॉलेस्ट की वैल्यू दी है, कौन सी वैल्यू? स्मॉलेस्ट मतलब क्या? स्मॉलेस्ट नहीं, ठीक है, तो वैल्यू निकालनी. दे आर आस्किंग अबाउट द स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म. वो पूछा गया है. तो पूछा गया है. What is mean by smallest? हमने लिया है एक्चुअली. स्मॉलेस्ट क्या होता है? मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर. यस, मिनिमम वैल्यू. वेरी गुड. तो टी मिनिमम कब होगा? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको मिनिमम थिकनेस मिलेगा? इक्वल टू जवाब 0. सोचिए.
t equal to 0, then it is something like it doesn't exist. It doesn't exist. At n equal to 1. Yes, absolutely right. Bhojraj. Very good. Absolutely right. Smallest thickness का मतलब हो गया n equal to 1. That is the condition that is given. And what you have to find out is the t. So we can just write t equal to n lambda divided by 2 mu cos r. Now here the question is whether you should convert this lambda from nanometer to meter. Convert करने की जरूरत है क्या? Here, in every numerical problem, you have to ask one question, whether this unit has to be converted into meter. Is it really necessary? Or you can think of the, for example, thickness in nanometer. अगर thickness nanometer में होता है, तो is it okay? Is it okay? See, every time it is not necessary to use the standard units. It is not necessary. Gold का क्या रेट है? सोने का रेट क्या है? Approximately. सर गोल्ड का 55,000 रुपए तोला सर. कभी आपने ये सुना है कि गोल्ड का रेट आपने किसी ने आपको किलो में बताया? No sir, never. We use normally, हम जो बात करते हैं ना, तो अरे सोना तो 50,000 हो गया, सोना तो 40,000 हो गया, 50,000 हो गया, 60,000 हो गया. We always think about 10 ग्राम तोला, right? यस सर. Yes, sir. वैसे हम बहुत सारे ऐसे यूनिट्स यूज करते हैं कि जो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है. फॉर एग्जांपल, आप टायर में हवा भरते हैं तो क्या स्टैंडर्ड यूनिट है उसका? उसका स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. हम ये कभी नहीं यूज करते. हम यूज करते हैं PSI. ठीक है, नॉट पुलिस सब इंस्पेक्टर. व्हाट इज PSI? किसी ने बताया था शायद पहले लेक्चर में. नहीं पता तो आप सर्च करो व्हाट इज PSI. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स है जो हम ऐसे यूज करते हैं विच आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट. तो हियर आल्सो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट दिस वेवलेंथ इनटू स्टैंडर्ड यूनिट. 10⁻⁹ मीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड. ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं. नाउ दिस टी मिनिमम यहाँ नहीं लिखा मैंने, यहाँ लिखा. So this will be 1 into wavelength is 589 divided by 2 and mu is 1.5 multiplied by cos 60. ठीक है, क्या इसमें ये मैंने जो लिखा है वो सही है या उसमें कुछ और होना चाहिए? And that is the biggest mistake you people do. You mean students. Even some teachers. You should always write the unit. Always. ये कैलकुलेशन कर रहे फिर भी ठीक है. You have to write the unit. तो 589 नैनोमीटर. कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे आप बहुत जल्दी में क्या करते हैं, 589 लिख देते हैं. ठीक है, and then you just write here something into meter. So that is the biggest mistake. तो रिमेंबर ऑलवेज. ठीक है, हाँ. cos 60 कितना होता है? 1/2. 1/2. तो this will be 2 multiplied by 1.5 multiplied by 1/2. So 2 get cancelled. So this is equal to 589 nanometer divided by 1.5. इसको कैसे सॉल्व करोगे? विदाउट कैलकुलेटर. विदाउट कैलकुलेटर 589 nanometer divided by 1.5. So what I can write is 589 divided by 3. लिख सकते हैं
Okay, this will be nanometer. अब 3 से डिवाइड करना बहुत आसान है. You don't need calculator. ये कैसे आ गया? 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. कितना आता है फिर बताओ? 392.66. 392.66. Right? Nanometer. This is very important. It's very important. ठीक है, समझ में आ गया? Clear? Any doubt? Yes, sir. Okay. So now the question 2. Taken numerically same, exactly same. उसमें कोई चेंज नहीं है, except bright it appears bright, okay, and again you have to find out T min. Calculate it. सेम, सभी वैल्यू सेम दिए आपको, सिर्फ ब्राइट की कंडीशन यूज करना और टी मिनिमम लिखना. And then you as soon as you complete your answer, just tell me. So answer A, B, C, D I will just write, because we may have more than one answer. Any answer? You can type your answer also if you are unable to speak. Okay, one answer has come 589 nanometer. Okay, let me write here. Shubhankar and Akrant has written 589. Any other answer? Okay, Minal also got the same. Asta also got the same. Good. Any other answer other than this? Ankit also got 589. I think everybody understood this. So we can just have 2 mu t cos r equal to 2n plus 1 by 2 lambda. Now what you have taken, okay, he is right.
व्हाट यू आर टेकन n इक्वल टू मिनिमम कितना लिया हमने यहाँ पे 1. why you are taking 1 Smallest thickness. जीरो लिखेंगे तब भी वो आएगा ना क्यों नहीं आएगा इफ यू स्टार्ट विथ जीरो Yes, sir. 0 से भी. हो जाएगा ना पॉजिटिव ही आएगा ना ये दिस विल बी हाफ लैम्बडा राइट so 2 mu t cos r equal to half lambda and equal to 0 and therefore t will be equal to and then this becomes 4 now so this is mu sorry 2 mu नीचे आएगा okay. So this is lambda divided by 2 mu so 2 into 2 is 4 mu and cos r okay. So this is equal to 589 nanometer sorry nanometer divided by 4 into 1.5 into cos r cos 60 is 1 by so 2 to the 4 and 2 into 1.5 is 3 so this will be 589 nanometer divided by 3 so how much it is okay 196.33 सही है तो ये गलत है yeah there should be nanometer Ankit you forgot it every time you have to write every time you have to write the answer the unit okay so you can see you can compare these two this the thickness for dark is 392 whereas the thickness for bright is 196 okay. Why it is so because here we started with n equal to 0 whereas here you cannot start with 0 you have to start with 1 so therefore this has to be less as compared to this clear any doubt any question Pakka? Okay now write down the another question and I want you to think on it and then solve it. This is not a direct question. You'll have to just give some thought on it. Okay. Write down a soap film of refractive index 4 by 3 4 divided by 3 4 by 3 and of thickness 1.5 into 10 to the power minus 4 centimeter 1.5 into 10 to the power minus 4 centimeter is illuminated by white light reflected by it is examined by a spectroscope in which it is found
a dark band corresponding to a wavelength of 5 into 10 to the power minus 5. 5 into 10 to the power minus 5 centimeter. Full stop. If the angle of incidence angle of incidence नहीं दिया है, सॉरी, उसको कैंसिल करो. Calculate the order of interference. Calculate the order of interference of dark band if the light is incident at an angle of 60 degree with normal. At an angle of 60 degree with normal. सबने लिख लिया? Okay. Let us start. What is given? क्या क्या दिया है आप? Refractive index Refractive index is given mu equal to 4 by 4 by 3. Second, thickness 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 is given कितना है? 1.5 into 10 to the power minus 2 centimeter. Minus 4, sir. Minus 4. Okay. Okay. Remember, this is in centimeter. Okay. Next, lambda wavelength wavelength दिया है, कितना दिया है? Five into 10 to the power minus 5 centimeter. और कुछ दिया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, कितना है? 60 degree. 60 degree. Okay. Any other thing? कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन लाइट डार्क Interference of dark band. डार्क बैंड. तो डार्क बैंड दिख गया मतलब इट इज फॉर डार्कनेस. Okay. Now the condition for darkness is 2 mu t cos r equal to n lambda. अब कैलकुलेट क्या करना है हमें? What we have to calculate? Right? क्या order पूछा? of interference of dark band हाँ, ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ डार्क बैंड. तो इसका मतलब है कौन सी वैल्यू निकालनी है? And की वैल्यू N value. n is unknown. So n is unknown. निकालो फिर. एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? आर की वैल्यू चाहिए ना हमें. आर की वैल्यू तो पता ही नहीं. Angle of incidence equal to mu is equal to sin i cos. Yes, it is Snell's law. Mu equal to sin I divided by sin R. तो निकालो फिर. आर की वैल्यू पहले कैलकुलेट करो and then tell me what is the value of R.
आर के लिए क्या क्या वैल्यू है? You can type your answer. (40.50 degree). One answer has come. Any other answer? Okay, I got more answers as the same. Okay. This seems to be most of you are getting the same 40.5. Okay, go ahead with this angle of refraction and now try to find out the value of order of this interference. If this is the value of R, then we can just find out. हमेशा ये याद रखना कि सबसे पहले जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में लेना, ठीक है? तो टेक दिस n on left hand side, so lambda goes to the denominator, so 2 mu t cos R divided by lambda. तो ये इस बार उदय मैंने सही लिखा है, उल्टा लिख हो गया. सही है सर. ये ओके, try to solve this. Now here lambda is also given in centimeter and t is also given in centimeter. So keep them as it is. वो एक ही यूनिट में अगर नहीं होते तो कर लेते हैं. Let me write here also. So 2 into mu. Mu is 4/3 into cos is 40.5 divided by 2 mu t. तो लिखे नहीं, multiply by t. T is 1.5 to 10 to the power minus 4
centimeter and multiply by cos 40.5 and divided by well, it is 5 into 10 to the power minus 5 centimeter. Obviously, this centimeter and centimeter get cancelled out. So now I can write this 1.5 into 2 is 3. So I can just cancel this. This is 4 by 5 simply. Into 10 to the power, कितना आएगा ये? 10 to the power minus 5 will go to the numerator. It becomes plus 5. So it becomes 10 to the power 1. Okay? And cos 45 कितना है? Sorry, cos 40. 0.76. 0.76. 760. Okay, 0.760. You can just calculate it. So 5 on the 5, 5 to the 10, 4 to the 8. It should be somewhere 5 point something. 6.08. 6.08. So this is approximately 6. Q. Why I have written 6? हम इसे ऐसे रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ऑर्डर है इसीलिए शायद. Yes, it is the order. It's the order, and therefore it has to be integer. तो इसका नजदीकी इंटीजर कौन सा है? तो 6. So the order of interference is 6. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? Any question? Any objection? Any comment? Any compliment? Chalo, last question. How many of you now are feeling that the physics problems are really difficult to solve? Raise your hand. उल्टा क्वेश्चन पूछ लो. जिनको ऐसा लगता था कि फिजिक्स प्रॉब्लम बहुत ही डिफिकल्ट है, उनको उनमें से कितने लोगों को अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, आई कैन सॉल्व दिस, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट? ऐसे कितने लोग हैं? गुड, गुड, वेरी गुड. नाइस. काफी लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि कर सकते हैं. ठीक है. So I'll be giving you some problems, not too much, maybe 4